So, hello everyone, and welcome to another online session of Campus Credential. Today we are going to discuss TCS Logical Reasoning Test. Yesterday we have already gone through one of the tests which is based on aptitude. Okay, so today we are going to dealing with logical reasoning. So do watch that session also. That's another very interesting session that you will see. Okay. Link will be provided in the description. So now since this session is live, so as you can see one question on the screen, try to solve in the next 30 seconds. Let's see if we can solve this question in 30 seconds. All right. Now, as you can see, this question that we have to find how many males are there in this relation. Okay. Now, first thing that you can learn from here is that whoever comes in the very end of the relation, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किए हुए हैं तो आपको पता चलेगा जो भी लास्ट में आता है इस रिलेशन में उसका जेंडर ही डिसाइड नहीं कर पाते हम लोग. सो इवन दो मैं बीच के लोगों का जेंडर डिसाइड कर पाऊंगा, लेकिन इसका जेंडर मुझे लास्ट तक पता नहीं चलेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो ये एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये आपके शायद हार्डली, अगर मुझे एक क्वेश्चन मिलता तो मैं 10 सेकंड में सॉल्व कर देता इसको, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो शायद आप इसको 1 मिनट टाइम लेने इसके लिए. Getting the idea? But what is the usual way of solving it? So you can see here that we are looking for males, and okay, so A plus B means A is sister of B, so A minus B means A is brother of B. So minus, that means this is male, and again only minus stands for male, so only one male you can identify, but still you will not be able to identify the last guy, and that's why answer is cannot be determined. Let's try another question. Take another you can say 45 seconds. All right. पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लाइक 30 सेकेंड्स. अभी मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको कि जो इस रिलेशन में लास्ट में आता है उसका जेंडर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं. नाउ एज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, सो इट्स क्लियरली स्पेसिफाइंग कि P हैज टू बी मेल, राइट. सो जो लास्ट में आ रहा है उसका जेंडर हम डिसाइड कर ही नहीं पाते, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव A एंड D कैन नॉट बी द ऑप्शंस. तो मेरा डायरेक्ट आइडिया जाएगा या तो B आंसर है या फिर आंसर C है. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? सो सी, सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, बट अगर आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया आ जाए तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को 60 सेकंड में सॉल्व करेंगे, वहीं पे छोटी छोटी टेक्निक्स की वजह से आप इसको 30 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. Getting this point? So as you can see, I will not be going with option A and D because P is coming in the very end. और जो लास्ट में आता है, मैंने अभी आपको बताया था, उसका जेंडर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं. ठीक है.
Now let's see with this. P is the maternal uncle of Q. Now what is this? P plus. Now as you can see here that A is mother of B. Plus means mother. That means P is getting female. So only option left for me is option C. So just by looking at gender, that now here P is getting female. So P cannot be maternal uncle. I got the answer without doing anything. Now you might be wondering कि इतने easy questions आते हैं क्या TCS में? Yes, my friend, ये TCS के ही questions हैं, ठीक है? और इन questions के अंदर obviously टेक्निक चाहिए होती है समझने के लिए. So without drawing or any family tree diagram, I got the answer. Getting this point? But anyhow, if I want to solve this question, how will I solve this question? P minus M. If we have time and if I want to solve this question, how I am going to do that? So P minus M, P is brother of M. So P is brother of M. M plus N. So M plus N means M is mother of N. N cross Q means N is sister of Q. Now I just want you to know whether P is maternal uncle of Q. As you can see here, these two guys are siblings and this is their mother. ठीक है, और उसका भाई है P. तो obviously P is maternal uncle for Q. So एक छोटी सी टेक्निक आपका बहुत टाइम बचा सकती है. एज यू कैन सी हियर दैट एक छोटी सी बात मैंने ऑब्जर्व करी कि ये लास्ट में आ रहा है. दिस कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज P हैज टू बी अंकल. तो जो लास्ट में आता है उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता. और फिर मैंने देखा यहाँ पर कि P इज गेटिंग फीमेल. सो P को तो मेल होना चाहिए था. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज विद C एंड देन C इज द आंसर. So obviously these techniques are to be learned. These techniques are to be taught. तभी ये चीजें जल्दी क्लिक होती हैं. Let's see another question. I would say 30 seconds. Let's see if we can solve this question in 30 seconds. Now this question is relatively very easy. Now this question is based on ranking, okay, ranking of letters. So it is B, R, E, A, D. So first we need to give them ranks. Let's see. See, whenever such questions approach, the first thing that you should think of is ranks. Now, what are ranks? If you don't know what are ranks, then you must see the complete session for this. Okay, you need a complete session. And just I want to tell you hint that A is 1, B is 2, C is 3, and so on. These are called as ranks of the letters. Okay, so with this sequence, I can say that B is 2, R is 18, E is 5, A is 1, and D is 4. But I can see that it is coded as 900. So what could be the logic in getting 900? So let's try if we can go for addition of these numbers. So 18 plus 2 is 20, 25, 30. I am getting the sum as 30, but it is coded as 900. I got the hint. ये कुछ नहीं हुआ है, square हुआ है इसका. Let's try if we can get the same logic on the another one. Dance. So D is 4, A is 1, N is 14, C is 3, and E is 5. Now if we add them, so it is 5 plus 3 is 8, 8 plus 14 is 22, 22, 25, 27, yeah. So it is 27. Now 27 square is 729. So we got the we got the logic here. Now we have to do the same thing here. Phased. F is 6, A is 1, C is 3, E is 5, and D is 4. Now add these. So 5 plus 4 is 9, 10, 16, 16 plus 3 is 19, and it's 19 ka square. It is 361.
So with this simple technique we got the answer. Now the thing is that यहाँ पर एक प्रॉब्लम पता है क्या है, रैंक को याद रखने की प्रॉब्लम है। जितनी तेजी से मैं रैंक निकाल पा रहा हूं, क्या आप निकाल पा रहे हो? इफ योर आंसर इज यस, देन इट्स 30 सेकेंड क्वेश्चन। बट अगर आपको रैंक याद नहीं है तो यू माइट एंड अप विद 1 मिनट और मोर देन दैट। Getting the point? So remembering rank is also an essential character of such questions. Okay, and we have complete video on this topic as well, like how to remember the ranks in a very quick way. Okay, we have experts, we have got expert trainers who can tell you how to remember these ranks in a very funny way. So उससे क्या होता है, आसानी से याद भी हो जाता है और आप फटाफट आंसर निकाल पाते हैं। Let's move to the next question. Okay, 30 seconds. Hope you have got the answer. Okay, those who will watch my session, this as a recorded session, please pause the video or when you, then only it will be helpful for you. And I hope you are guys are ready with pen and paper. Okay, even though it's a logical reasoning question, but still I will prefer, or I would say that be with pen and paper, because ठीक है, आप solve कर सकते हैं logical questions को, but थोड़ा बहुत scribble तो करना ही पड़ता है. Okay, you cannot avoid that. So anyway, so let's move ahead. One morning, Jay and Veeru were standing on a ground facing each other. Okay, so morning. Okay, it's about morning, and morning we know that the sun is in east, and this is the convention, guys. Okay, that right side is east. Okay, this is north, the direction you are facing, and the opposite one is south, and the left is your west. Okay, so what do we observe? That it's about morning. So obviously the sun is in the east. And who observed? Viru observed that the shadow of J was falling to his right. So how do you think J would be standing like? अगर J ऐसे फेस कर रखा है उसने, तभी उसका शेडो, बिकॉज ये राइट है उसका, राइट? तो अगर सन इधर है तो शेडो इधर आएगा इसका। सो J का फेस किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स साउथ। Then only his shadow will fall to his right, right? Now, in which direction was Viru facing? Now, we are not talking about Jay, we are talking about Viru. कि Viru का क्वेश्चन पूछ रहा है कि Viru किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, because they are facing, they are talking face to face. So obviously Viru is pointing north, and hence the answer is north. Hope you have understood this point. सिंपल लॉजिक है कि मॉर्निंग के अंदर सन हमारा ईस्ट में रहता है, और ईस्ट से में रह करके अभी यहाँ पे बोल रहा है कि वीरू ऑब्जर्व, हु ऑब्जर्व? वीरू ऑब्जर्व द शैडो ऑफ जय इज फॉलिंग टू हिज राइट। नाउ जय के राइट में शैडो कब आएगी? तो अगर योर सन इज ऑन द ईस्ट एंड जय इज हेयर, सो ऑब्वियसली जय जब तक साउथ में नहीं दिखेगा जब तक उसकी शैडो राइट में नहीं जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? And if J is facing this way, so obviously Viru is facing this way. So we have the question is asking about Viru, and hence the answer is north. Hope you have understood the point, right? Now the question was taken from distance and directions. Very easy topic in the whole aptitude, I would say. सबसे आसान टॉपिक कोई होता है पूरे एप्टीट्यूड के अंदर, तो सबसे आसान टॉपिक होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। अगर ये भी सॉल्व नहीं कर पाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट crack the question. Okay, another question have been taken from the same topic. Okay, let's say 30 seconds, again easier one.
So I hope you might have got the answer. Let's see what is the answer. Akash walked. Now this, see, whenever you are given this directions north, okay, it is easier to crack. Problem comes when we have this left turn or right turn. So to decide which one is left and which one is right, there we stuck. That is the problem. So how to tackle this situation? Now let's look at this. Akash walked 30 feet north. So 30 feet north. Now, one of the idea of asking such questions is why this question. I mean, it is so silly. Then why they are asking such questions? The point here is they want to know whether do you understand the sense of direction. Do you have sense of direction? This is what they want to check. Further, they want to check how well you can draw roughly to the scale. This is the idea. See, if I have drawn this much as 30, so I cannot show 20 like this. Are you getting this? I cannot show 15 like this. So obviously, to a reasonable scale, we have to draw it, right? This is the idea. So the idea of asking such questions is how well you can draw roughly to the scale. This is the main point here, okay? So what we are checking is your roughly to the scale, how well you can draw. So if I have mentioned that this is 30, okay? Now I have further mentioning this arrow mark. This helps us in finding the direction. Okay, agar ye arrow mark aisa hai, that means it's facing towards north. So this will be left and this will be right. Just like as if you guys are sitting or I am sitting, right? So जैसे मेरा right उसका right हो जाएगा और मेरा left उसका left रहेगा. So this is 30 feet, okay? Now he took left turn and walked 15. So obviously अगर ये 30 है तो उसका तकरीबन आधा रहना चाहिए, right? As per the scale. Again, I have put the arrow mark so to make sure okay, which one is left and which one is right. So this is right and this is left. Then he took a left turn and walked 30 feet again. So here he walked 30 feet here. How far and in which direction is Akash from the starting point? Now this is very important. किधर से किधर का डायरेक्शन पूछा गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कि वो आकाश किस डायरेक्शन में है और कितना दूरी पर है. ठीक है ना. सो डायरेक्शन यहां से ली जाएगी, यहां से इसका ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा. पॉइंट एरो मार्क इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, moving towards this final position. As you can see, it is west, and as you can see, this length is 15. So the answer is west 15. Hope you have understood the point. So what is the key point in this topic is that how well you can draw roughly to the scale and what is the sense of direction. These are the main two key points in this topic. Okay, let's solve one more question. Okay, let's take, I would say 40 seconds will be enough. I hope you have got the answer. Let's see if it is matching with the correct answer. Now this topic has been, this question has been taken from the topic called as logical deduction. Okay, logical deduction. And we further call this as syllogisms also. Okay, when the same thing. Now all liquids are solid. All. Now how I'm trying to solve it? I'm solving it using Venn diagram because this is the one of the best approach of solving such questions. वेन डायग्राम्स के अलावा भी कुछ लोगों ने टेक्निक्स निकाल रखी हैं, ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू ऑल, सम प्लस नो इज इक्वल टू नो, ऐसा कुछ टेक्निक्स हैं, बट उसमें रटना पड़ता है. बट वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज यूजिंग this Venn diagrams. You don't have to mug up much and still get the answer. So all liquids are solids. Some solids are gases. Now यहाँ पर एक रूल है कि भाई हम लोग मिनिमम ओवरलैप पे बनाते हैं डायग्राम्स को, क्योंकि पॉजिटिव कंक्लूजन्स के लिए मिनिमम ओवरलैप बनाया जाता है. तो मिनिमम ओवरलैप की वजह से यहाँ पर ही गैसेस को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. ऑल गैसेस आर क्लाउड्स. नाउ ऑल गैसेस आर क्लाउड्स.
this diagram and Venn diagram looking like. Now let's move to the conclusions. Now some clouds are solids. So some clouds are solid. As you can see कि यहाँ पर हमको कुछ ओवरलैप नजर आ रहा है clouds में और solids में. So yes, this is true. As we can see, this is the point we are talking about. So one is followed. Now let's see the second one. Some clouds are liquids. Some clouds are liquids. As you can see, there is no overlap between cloud and liquid. जब कोई overlap ही नहीं है, तो it will not be followed. ठीक है ना? अब I hope you are getting this point, right? Why we have drawn with the minimum overlap rule? इसका रूल क्यों है? इसके लिए पूरा theory पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. इसके पीछे का reason क्या है? Why not the other way around? हमने diagram ऐसा क्यों नहीं बना लिया? उसके reasons हैं. So still अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता के जा रहा हूँ कि भाई minimum overlap कुछ चीज होती है. Minimum overlap एक रूल होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. Now some gases are liquids, some gases are liquids. There is no overlap between gases and liquids, as you can see here, right? So this is also ruled out. Some solids are clouds. Some solids are clouds. Yes, some solids are clouds. This is true. So only first and fourth follows. Hence the option is D. So guys, ये टॉपिक अपने आप में काफी पूछा जाता है, काफी डिस्कस किया जाता है. Not just TCS. Okay, this is not about TCS. I would say most of the companies does ask questions from this topic. Very important topic. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि it is least understood also. This is the another problem. So इसको समझना आसान है. मतलब इसके कुछ दो चार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. अगर वो अपने माइंड में रख लिए, the topic is very easy, damn easy. Directly you'll get the answer. But because of people are involved in so many techniques and shortcuts, people get confused. So जितना आप चीजों को आसान रखोगे, मिनिमम पे रखोगे, उतना ही जल्दी समझ में भी आता है, कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है. तो जितना आप उसको नए नए टेक्निक्स लेकर आओगे, नए नए शॉर्टकट लगाओगे, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. कीप इट सिंपल. If you want to know further, you can watch the complete video. We have this video session about this also. Okay, do watch that. Now this question has been taken from data sufficiency, another very important topic. It's a very hot topic of today's campus placement exams. Just try. And even though TCS provides only 1 minute question for easier one questions and 90 seconds for the difficult one, now I would say 90 seconds for this question. Okay, just try. So by the time you might have got the answer, I guess, even though I have given you 90 seconds, but कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है. Let's see if we are on the right track. So he's saying that x square by t square is equal to 4 by 9, and he's looking for what are the integers and what is the value of x. Okay, first of all, we understand how we have to answer such questions. Now there's lots of confusion because of the way in which we get the solution statements. Now what he's saying is that statement mark option A if statement 1 alone is sufficient but not 2. Okay, mark statement mark option B as the answer if statement 2 alone is sufficient but not statement 1. Now mark option C if both statements together are sufficient but neither of them are standing alone. Okay, statements alone are not sufficient to get the answer. Mark option D when each individually sufficient to get the answer, and E in case when both failed to get the answer even though.
नाउ यहाँ तक कहानी जो है हमारी, यहाँ तक कहानी जो है, यहाँ तक जब तक आप इनको ए और बी तक की बात कर रहे हो, या फिर आप इस पॉइंट की भी बात करें, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर अलग किया हुआ है लोगों ने, हर क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज होता रहता है, बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो, तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं ये लोग। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स और ये जो चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जब तक आंसर इनमें से कोई एक आता है, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आंसर इनमें से कोई भी आता है, ए बी या फिर डी में से, तब तक आपको इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। वी कैन नॉट मिक्स, नाउ व्हाट आई मीन बाय इंडिपेंडेंट इज, वी कैन नॉट मिक्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज टू स्टेटमेंट्स। जब तक आंसर कोई एक ऑप्शन दे दे या दोनों ही दे दें, तब तक हम इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे, यानी कि इनके अंदर दी हुई हिंट हम मर्ज नहीं कर सकते, इन दोनों इंफॉर्मेशन को मर्ज नहीं किया जा सकता जब तक। जब एक चौथा केस बनता है कि when both individually failed to get the answer, only in that case we have to combine the information, जैसे यहां पर आया हुआ ये सी ऑप्शन, कंबाइन करके अगर आंसर मिल जाता है तो आंसर इज सी, अगर दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं मिला, इन दैट केस आंसर इज ऑप्शन ई डायरेक्टली। होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर कुछ भी निकल कर आ सकता है आंसर, ठीक है? वी विल सी मोर क्वेश्चन बिकॉज आई हैव ब्रिंग मोर क्वेश्चन ऑन दिस कैटेगरी, very important category. Now look at this. We are looking for what is the if t and x are integers, then what is the value of x? Okay, we are looking for x, and okay, what is looking for the value of x? Okay, that's good. So what do we got? X by t is equal to 4, okay, root of 4 upon root of 9. You might have heard of this thing also कि जब भी हम लोग रूट लेते हैं, जब भी whenever we are looking for the root, we always go for plus or minus. Understand this, okay? And I guess something is wrong in the question. It should be like if t and x are integers, then what is the value of x by t? I think this okay, let it be t1. That's not a problem. Okay, we'll change the answer. That's, you might have already solved it. So but very careful is that, guys, we get what? Plus or minus. So as we got, this will be like plus or minus 2 and plus or minus 3. This is very important, huh? Whenever we takes the root. Now what is the second question? X is greater than 0 and t is greater than 0. X is greater than 0 and t is greater than 0. So okay, first tell me, do we got the answer from this equation? No, because still x by t is equal to either 2 by 3. Okay, and we know, I mean, there are 4 combinations possible. Are you getting this idea? Plus minus is going with this, so I can take further this as minus 2 by 3. I can take this as further as you know, so these are the possible values. Okay, did I got the answer? No, because I was looking for x and still I'm getting x by t. Okay, so 1 is not sufficient to get the answer. Let's talk about the second one. X is greater than 0 and t is greater than 0. So x is greater than 0, t is greater than 0. How will I come to know what could be x or what could be t? So obviously second also failed to get the answer. See, array, x is greater than 0 matlab kya? 1 2 3, it's open line, right? And t is also same thing, 1 2 3, it's again on open line. So both individually failed to get the answer. Now the second point comes, can we combine and get the answer? Let's see. So if we combine the information, he's saying that x by t is equal to 2 by 3 and x and t are greater than 2 by 3. X is greater than 0 and t is greater than 0. So अब एक चीज समझ में आ रही है, शायद आपको भी हिंट आ रहा होगा कि यार ऐसा हो सकता है कि देख, इधर भी x by t आया है 2 by 3 और इधर x और इधर भी देख 2 और 3 दिख रहा है, राइट? So can we say that x is equal to 2? Now this is the trap, because it's again a ratio. It's again a ratio and not the answer, guys. X by t is equal to 2 by 3. Are you getting the point? So it could be like we don't find a unique answer. Are you getting this idea? Because this is a ratio given. This is not the value. This is not the word. This is the ratio given as. Okay. So infinitely many numbers are possible to get the answer for this. Getting this idea? I mean, I can get this as way like 4 by 6. Same thing I can get like 6 by 9. So there are infinitely many solutions are possible for this equation, and hence
The answer is option E. Statements 1 and 2 together are not sufficient to get the answer. Hope you have understood this point. Let's move to the next question. Again, taken from DS, data sufficiency. I would say here 45 seconds. This is a 45-second question. I mean, I've given extra time, I guess 45 seconds. Actually, it should be like 30-second question. But okay, let it be 45. All right, so let's try to solve this question. Salaries of Karan and Arjun are in the ratio 4:5. What is the salary of Karan? So सैलरी का रेशियो दे रखा है भाई, ये करण है और ये अर्जुन है, और पूछ रहा है कि करण की सैलरी कितनी है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? दैट अर्जुन सैलरी इज 444. आई थिंक इट्स 8 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स. सो जाहिर सी बात है, अगर रेशियो के अंदर आपको कोई एक चीज पता चल जाए तो दूसरा आप आराम से निकाल सकते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सी आप एक्स ले सकते हो जैसे कि 4:5 इज द रेशियो. आपको पता है रेशियो कब आता है? जब कोई चीज कैंसिल आउट होती है तो फिर आप एक्स को वापस डाल लेते हैं. व्हाट इज एक्स? कॉमन जो कैंसिल आउट हुई है, और ये 5x. और 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी गाइस, एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे हमको निकालना नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है. भाई उसने पूछा है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ करण. बस हमें पता करना है क्या हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे. दैट्स इट. वी डोंट हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस एक्चुअल सैलरी. Nobody is asking, nobody is bothered about that. As you can look at the options. हमको उसकी सैलरी नहीं निकालनी है, हमको निकालना है कि निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं हम उसकी सैलरी. दैट्स इट. अच्छा, ये एक्सप्रेस की भी जरूरत नहीं है. मतलब अगर आप देखो, अगर आपको एडवांस कंसेप्ट पता है रेशियोज के, तो आपको ये भी कल हुआ था सेशन. देखिए हमारा कल ही सेशन हुआ है हमारा कैंपस क्रेडेंशियल के थ्रू, और उसके अंदर टीसीएस का एप्टीट्यूड क्वांट पार्ट लिया गया. तो मिड लेवल एंड एज वेल एज एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लिए गए. तो गो थ्रू दैट ऑल्सो. देयर यू माइट लर्न दिस टेक्निक्स ऑफ शॉर्टकट के 4/5 में एक्स लेने की जरूरत नहीं है. बस 5 की वैल्यू इतनी है, 4 की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाती है. मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा नंबर चेंज किया था क्वेश्चन में. आई हैव पर्पसली चेंज द वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स ठीक है, टू मेक इट लुक डिफिकल्ट. अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था. तो मैंने जानबूझ के 5 की वैल्यू ऐसा नंबर लिया जो 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है. एज यू कैन सी, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. पर्पसली लिया गया है वो. तो मुझे निकालना भी नहीं था ना. द पॉइंट वाज, आई वाज नॉट लुकिंग फॉर व्हाट इज करंट एक्चुअल सैलरी. आई वाज लुकिंग कि मुझे निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं. दैट्स इट. सो मैं निकाल सकता हूं. मुझे कोई एक दोनों में से किसी एक की भी सैलरी मिल जाएगी, मैं निकाल सकता हूं दूसरा पैरामीटर आराम से. दो क्या, अगर मेरे पास ऐसा कोई रेशियो लिखा हुआ है ए बी सी, ऐसा कोई रेशियो है, और मुझे कोई एक ही पता चल जाए कि ये अगर 50 है, तो बाकी मैं आराम से निकाल सकता हूँ सब दोनों चीजें. सो अगर आपके रेशियोज क्लियर नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. ओके, और डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज गाइज दिस इज द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स अस. नहीं तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है ठीक है ना. So anyway, these are the points that you have to take care of it. So even I can get the answer from this. So one is sufficient to get the answer. The sum of Karan and Arjun is this. Obviously, I can get the answer because I know that's the ratio. अब मुझे इंडिविजुअल कोई बता दे, मुझे इनका कोई सम बता दे, मुझे कोई कल को इनका डिफरेंस दिखा दे, definitely I will get the answer. Even second is sufficient to get the answer. So each statement alone is sufficient to get the answer, and hence answer is option D. गाइज, अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि हम रेशियो से कैसे फटाफट कर पाते हैं सब चीजों को, सो बिकॉज अभी टाइम का थोड़ा सा कमी है, तो देखना पड़ेगा. यू हैव टू कम टू द, आई मीन, प्रॉपर concept of ratios. And trust me guys, ratios are very important topics from exam point of view, because ratios and percentage, ये दो टॉपिक ऐसे है ना, 50% ऑफ द एप्टीट्यूड कवर कर लेते हैं बैठ करके.
50%, किसी भी क्वेश्चन में आके बैठ जाते हैं, बिकॉज जनरल है, ठीक है ना। सो डू हैव अ नाइस प्रैक्टिस अबाउट रेशियोज एंड परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, होप यू गॉट द मीनिंग एंड गॉट द आंसर एज वेल. आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Take 60 seconds. I would say go for 60-second question. I hope you might have got the answer. And by the way, I think I forgot to put the options. So let me put the options from here itself. Okay, let me go to the next slide. I think it's also based on the same thing. So I can put the options like here. So this is a complete question. I hope you've got the answer now. So anyway, let's solve this question. The cost of certain phone call was 0.75 per person. Now this is very important. Huh? बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 3 मिनट के लिए 0.75 चला देते हैं, इनको पर मिनट, सॉरी नॉट 3 मिनट्स के लिए. क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट 3 मिनट्स एंड नॉट, इट्स लाइक 0.75 पर मिनट फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स. इट्स नॉट लाइक दिस. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रिटेशन दिस, बिकॉज थोड़ा सा जल्दी रहती है ऑब्वियसली. तो बोल रहा है कि पहले 3 मिनट के लिए फिक्स्ड प्राइस है, 0.75 ही पे करना है. दिस इज व्हाट इट मीन. For the first 3 minutes, you have to pay only 0.75 only. After that, you will be paid, you will be charged like 0.2 for the next every minute you are going to make the call. Okay. So this is very important. Did the phone call last longer than 15 minutes? Okay. The cost of the phone call was less than 4.16. Okay, let's talk about, okay, 3 minutes are gone here. So I have to calculate for 12 minutes. कि 12 minutes में और कितना पे करना पड़ेगा इसको, तो 12 into 0.2 कर लेते हैं. So 0.75 plus 12 to the 24 is 2.4. 2.4 plus 0.75 is 5, 1 and 3.14. Okay, 3.25. So he will be charged for $3.25 for 15 minutes. What do we got? 15 मिनट के लिए भाई इसको $3.25 का चार्ज आएगा. ठीक है. Now let's see what the question is. The cost of the phone call was less than $4.16. उसका खर्चा $4.16 से कम आया है. तो क्या मुझे पता चल गया कि उसने फोन कॉल 15 मिनट से ज्यादा का लिया है या कम लिया है? क्योंकि $3.25 तक ही में 15 मिनट हो गया. अब वो कहाँ पे रुका है हमको ये नहीं पता ना. अरे 4.16 से 4 पे रुक गया, 4 से और नीचे आ गया, 3.5 पे आ गया, 3 पे आ गया. वी डोंट नो. इट्स एन ओपन स्टेटमेंट. लेस देन 4.1 इज एन ओपन स्टेटमेंट. वी डोंट नो व्हाट नंबर इज गोइंग टू कम. सो उसका कॉल 15 मिनट से छोटा भी हो सकता है, उसका कॉल 15 मिनट से बड़ा भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर. So this why this is gone. अच्छा, वन मोर थिंग. सिर्फ हम उसी को ही हिंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हर केस में ट्रू आंसर दे, फेल ना हो, करेक्ट आंसर दे. गेटिंग द पॉइंट. जहां आपको लग रहा है कि एम्बिग्यूटी आ गई, हो भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इट्स गॉन. जैसे यहाँ पर भी ये केस बन रहा है, तो ये 3.25 से हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर. दैट्स व्हाई इट इज, दिस पॉइंट इज गॉन. Look at the second question. In the second hint, the cost of the phone call was greater than 3.35. And we see, to make a 15-minute call, he will spend 3.25, and the call is already more than 3.35. So obviously, it has exceeded 15 minutes, and second is sufficient to get the answer. And that's why answer is option
B. Hope you have got this point. This is very important, huh? Because investigation is required in such questions. A little investigation is required, obviously. You cannot solve without that. थोड़ा प्रैक्टिस लगती है ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, ठीक है? And I have brought the last question in this category, again from DS. Again, a very important question, okay? Let's see if we can solve this question. I'm going to give you again 60 seconds, not more than that. Try this. All right, let's solve this question. Is X an even number? Okay. So the first hint says that X lies between 91 and 97. So I can say X to be 92, 93, 94, 95, or 96. Can you find any of them as prime? इनमें से कोई प्राइम नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, टेंशन मत लो. सो उसने बोला क्या X प्राइम, ओके इवन लिखा है क्या यहाँ पे? ओह माय गॉड, यहाँ पे इसको प्राइम ही रहना चाहिए था. सम प्रिंटिंग मिस्टेक, माय बैड. क्योंकि अगर इसको इवन भी रखा तब भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू वांट टू गो विद दैट ओनली, वी कैन गो विद दैट. एक्चुअल क्वेश्चन वाज फ्रॉम फॉर प्राइम, बट इट्स फाइन. अगर आपने इवन लेकर रखा हुआ है तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं. ओके, लेट्स सी. सो क्या x इवन नंबर है क्या? तो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ ऑड नंबर्स हैं, कुछ इवन नंबर्स हैं, फिर से कुछ ऑड नंबर आ गया. तो आई एम नॉट क्लियर विद दिस हिंट, एंड सिंस आई एम नॉट क्लियर विद दिस हिंट, सो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट. एम्बिग्यूटी आ गया ना, इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट x इज, राइट? सो दिस इज गॉन. Now the second question is x is a factor of 121. Now what are the factors of 121? It could be 1, it could be 11, it could be 121. It could be 1, it could be 11, it could be 121. उसने बोला क्या x इवन नंबर है क्या? और आपने बोला सर x इवन नंबर नहीं है. इट्स क्योंकि सारे आपको ऑड ही दिख रहे हैं ना. अरे 1 ऑड है, 11 ऑड है, 121 ऑड है. सो आप, मैंने पूछा क्या x इवन नंबर है, आपने बोला सर x इवन नंबर नहीं है. क्या मुझे आंसर मिला? यस, मिल गया भाई, मिल गया इसका आंसर. दिस इज अ ट्रैप. again I'm telling you, I'm telling you this again, okay, TS is a very important topic and this is the trap question they have made it, even though the original question was a prime. ठीक है, मेरा ही क्वेश्चन है. So just for this argument, I mean for the sake of clarity of the thoughts, I've brought this question into picture. यहाँ पर आंसर, if you can see, आंसर नेगेशन में आया है. मैंने पूछा क्या x इवन नंबर है क्या, आपने बोला x इवन नंबर नहीं है. नेगेशन में आंसर आया, लेकिन आंसर मिल चुका है, इसलिए मुझे सेकंड इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर. गेटिंग द पॉइंट. नाउ आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, छोटा सा हिंट जो मैं हमेशा देता हूं अपनी क्लास के अंदर, कि अगर आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो क्या आपको आंसर मिला या नहीं मिला? जाहिर सी बात है, अगर उसने मना किया तो आंसर तो मिल चुका है ना, कि नहीं है भाई, नहीं है. तो नहीं में आंसर मिला है, लेकिन आंसर तो मिल गया ना. दैट्स मोर देन इनफ. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट फिलहाल हमको आंसर मिल चुका है कि यार मना हो गया, ना हो गया, और क्या हो गया. ठीक है. सो दिस हाउ दिस आंसर इज इफ वी आर लुकिंग फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन. ठीक है. नाउ अगर मैं इसको प्राइम बना लेता हूं तब आंसर क्या आएगा? आई कैन सॉल्व दैट वे आल्सो, बट आई थिंक दैट विल बी अनदर क्वेश्चन. और शुड आई मेक अनदर क्वेश्चन, लाइक आई मीन let's make is x a prime number, let's say with the same conditions. What could be the answer? Let's see if we can solve this question. Take 30, okay, let's 45, I mean मुझे लगता नहीं 40 सेकंड लगेगा आपको, 30 सेकंड में सॉल्व कर देगा. सेम कंडीशन से, सेम कंडीशन. Let's see if you can get the answer for this one. Let's see.
I hope you have got the answer. Let's see if the question would have been like which one is prime or x, if x is prime or not. So as per this, you can get the answer as 92, 93, 94, 95 and 96. So उसने पूछा x प्राइम नंबर है क्या, और यहाँ पे एक भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या बोलोगे? सर x प्राइम नंबर नहीं है। द क्लियर आंसर इज, मैंने पूछा x प्राइम नंबर है, आपने बोला x प्राइम नंबर नहीं है। डिड आई गॉट द आंसर? यस। सो इन दैट केस दिस becomes sufficient to get the answer. Hope you're getting the point. Now, if x is a factor of 121, let's see, it's 1, it could be 11, it could be 121. So guys, this is prime, सभी को पता है, this is composite, और मेरा ख्याल है सबको ये भी पता है कि 1 भाई साहब क्या है? नीदर। सो मैंने पूछा x प्राइम नंबर है क्या, आपको लग रहा है कभी वो नीदर दिखता है, कभी वो प्राइम दिखता है, कभी कंपोजिट दिख रहा है, तो आपको कोई यूनिक आंसर मिला? नहीं मिला, एंड इन दैट केस दिस फेल्ड. So had this question been prime number about, my answer would have been A. And this question is about even, so my in that case my answer is option B. So just a little bit understanding of the concepts and topics make these things very clear, guys. So I would suggest, see, aptitude is not a last minute study. Understand this, huh? Very important. Aptitude is a skill. It's not that you can do in one night. Just like engineering में करते करते आदत पड़ जाती है ना कि 40 रातों वाले इंजीनियर से हम लोग रात में पढ़ो सुबह को पास हो गए, दैट्स फाइन, यू कैन डू दैट। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो डेवलप करना पड़ता है। सो आई ऑलवेज गिव एग्जांपल कि अगर यू वांट टू लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग में आपने इतनी मोटी बुक है 100 पेजेस की, वैसे तो आपको मोटी बुक से डर नहीं लगता 100 पेजेस की बुक है और आपने पूरी बैक टू बैक, कवर टू कवर, डॉट टू डॉट पूरी रट ली, मगर कंप्लीटली सर, कंप्लीटली, और आप पानी में उतर गए, बताओ स्विमिंग कर लोगे या पानी पियोगे? गेटिंग द पॉइंट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गाइस, दिस इज अ स्किल, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है? Okay, this question, I would say 20 seconds. Well, 20 seconds ज़्यादा कम कर दिया शायद, मुझे लगता है Let's make it 60 seconds. Not an issue. 60 seconds. What is the angle in 50 degrees between the etc. So, अब जिसको I don't know, should I start talking? जिसको आदत नहीं होती वो तो फटाक से जीरो मार के निकल जाएगा, अरे इतना आसान क्वेश्चन आ गया भाई, इससे आसान क्या हो सकता है लाइफ में, हाँ 3:15 की टाइम चल रही है और एंगल पूछा हुआ है तो जीरो ही होता है, और क्या होता है? सभी को पता है जीरो होता है, बच्चा बच्चा जानता है, हाँ। लेकिन बच्चे बच्चे को क्या पता कि ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। देखो 3:15 में मिनट हैंड यहाँ पे बैठेगा, ये तो पक्का है। बट डू यू थिंक गाइस, डू यू थिंक कि आर हैंड यहीं पर रहेगा? अरे 3 बजे वो यहाँ पर था, 3 बजे कहाँ था आर हैंड? 3 बजे यहाँ पर था, जब 3 बज रहे थे ना तो यहाँ पर था। जब 15 मिनट तक ये हमारा मिड हैंड चला है, तो ये वेट क्यों कर रहा है यहाँ बैठ करके? अरे ये भी तो आगे निकलेगा। यस, तो कितना आगे निकलेगा? तो ये एंगल आगे निकलेगा, क्योंकि मिड हैंड यहाँ बैठा हुआ है और आर हैंड यहाँ तक पहुंच चुका है, तो व्हाट इज दैट एंगल? तो अभी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी बात आर हैंड के बारे में, छोटी सी बात आर हैंड के बारे में, कि जितना टाइम ये मिनट्स में ट्रेस करता है, जितना एंगल ये मिनट्स में ट्रेस करता है, ओके, जितना हाउ कैन से, ओके, टाइम ट्रेस्ड इन मिनट्स, दैट विल बी अ बेटर वर्ड, टाइम ट्रेस्ड इन मिनट्स, उसका हाफ कर दो, द एंगल विल बी गिवन इन डिग्रीज। क्या मतलब, वो नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। 15 मिनट में हमारा हैंड, आर हैंड, 15 मिनट में आर हैंड यहां से यहां पहुंच गया, ओके, शुड आई इरेज इट प्रॉपर्ली? 15 मिनट में आर हैंड यहां से यहां पर आ गया बच्चे, तो 15 मिनट में कितना चलेगा? तो मेक हाफ ऑफ इट, दैट इज 7.5 डिग्रीज, दैट इज आंसर।
जितना भी एंगल वो ट्रेस करता है मिनट्स में, उसका हाफ कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर इन डिग्रीज। दैट्स इट। ठीक है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स ट्राई इफ you have understood this properly or not. Hardly 40 second question, not even 40, 20 second question है। तो the moment you have understood the trick, जो भी मैंने पिछली बार सिखाई थी, अभी अभी मैंने पिछली प्रीवियस स्लाइड पे सिखाई है, इट्स गॉन, द क्वेश्चन इज गॉन। 3 to 5 is 2 hours। 2 hours मतलब क्या होता है भाई? 2 hours मतलब होता है 120 मिनट्स। 120 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, कितना हो गया भाई? 150 मिनट्स। उसका आधा कर दो, आ गया आंसर, 75 डिग्रीज। गेटिंग द आइडिया? जितना भी वो मिनट में ट्रेवल करेगा, उसका हाफ करने पर वो डिग्रीज में आंसर दिखाएगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई पुट दिस क्वेश्चन दैट यू हैव प्रैक्टिस दिस टेक्निक और नॉट। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। I would say 50-second question, right? तो लोगों ने एक चीज रट रखी है कि एवरी एंगल इज फॉर्म्ड ट्वाइस एवरी आवर। एक छोटा सा एक शॉर्टकट है, बट एक्सेप्ट फॉर जीरोस एंड 180 डिग्रीज, उसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी लगा लेते हैं लोग। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई पंच लाइन रटी हुई है या नहीं रटी हुई है, बट एक थिंक है, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके पास 30 सेकंड दे दिए जाएं। सो अगर ये 12 o'clock की पोजिशन है और ये 11 बज रहे हैं फिलहाल, एज यू कैन से इट इज somewhat 11. Now after this minute hand goes and comes to this position, the our hand is already at this position. By the time 11 बजे से जब तक ये 12 बजे तक ये घूम कर आएगा, कौन? हमारा मिनट हैंड, जब तक ये भाई साहब आर हैंड 12 के सामने पहुंच चुके हो। सो यहाँ पर कोई ओवरलैप होगा ही नहीं। जस्ट वन वर्क आई वांट टू गिव, 12 से 12 के बीच में भी कोई ओवरलैप नहीं होने वाला। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ना 11 से के 12 के बीच में कुछ ओवरलैप होता है, ना 12 से 1 के बीच में कोई ओवरलैप होता है। ओवरलैप का मतलब क्या है बच्चे? 0 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, याद रखना इस बात को कि 180 डिग्रीज कब नहीं बनता है। 180 डिग्रीज का बता रहा हूं मैं आपको। सो 6 से 7 के बीच में नहीं, और 5 से 6 के बीच में भी 180 डिग्रीज नहीं बनता है। इनके बीच में नहीं बनता है। एग्जैक्टली 6 बजे बनेगा, एग्जैक्टली 12 बजे 0 बन जाएगा, लेकिन 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में 180 डिग्रीज नहीं बनता है। एक्सेप्शन केस में जाते हैं। होप यू गॉट दिस पॉइंट। Now this is a very interesting and I would say lovely question. I would like to give it 60 seconds. Should I give more? ठीक है, 90 seconds। जितना आसान है उतना है नहीं, दिखता है आसान लेकिन इसका कुछ चक्कर है। Okay, we'll see that चक्कर। What is the चक्कर? Crack that code, you know, right? एंड मोस्ट यू माइट हैव गॉट द लाइक 6 बज रहे हैं यार, तो 6 बार स्ट्राइक करेगा वो 6 टाइम्स के लिए 30 सेकंड्स ले रहा है। सबका रीजनिंग करता है तो एक स्ट्राइक के लिए 5 सेकंड ले रहा है। 12 बज रहे हैं तो 12 बार स्ट्राइक करेगा, 12 × 5, आंसर इज 60।
which is option A, and which is wrong also. ठीक है. So why this approach is wrong? Now this is थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, एंड इट इज बेस्ड ऑन काउंटिंग. ठीक है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काउंटिंग. थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में. ओके, नाउ लेट्स से दिस इज आवर bells which strike. Okay, now 6 o'clock, this clock strikes 6 times. So what do you think, ये जो पहला स्ट्राइक है वो कब हुआ होगा? ओके, कब हुआ होगा? तो नॉर्मल लॉजिक तो ये है कि 0 सेकंड पे होना चाहिए. जैसे ही 6 बजने चाहिए वैसे ही पहला स्ट्राइक तो आ जाना चाहिए इसका, राइट? 0th सेकंड पे, 0th सेकंड, हाउ टू राइट दिस, 0th सेकंड, 0th सेकंड में उसका पहला स्ट्राइक होना चाहिए. उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3rd. मतलब स्ट्राइक तो हो चुका है. स्ट्राइक में काउंट कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्राइक काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्राइक्स है, लेकिन जो पहला स्ट्राइक है वो 0 सेकंड पे रहना चाहिए. देखो आपने, अगर मैं आपको पहले वाले कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ, तो 6 टाइम्स 30 सेकंड्स ले रहा था वो. ठीक है, एक स्ट्राइक, एक स्ट्रोक के लिए कितना टाइम लग रहा है? एक स्ट्राइक के लिए योर ऑप्शन इज 5 सेकंड्स. सो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पता है कैसा आएगा? देखो कैसा आएगा. 0, सॉरी नॉट 0, दिस इज 5, दिस इज 10, this is 15, this is 20, this is 25, this is 30. Okay, so this is the sequence. But look at the error. I mean, the 6th strike is happening after 30 seconds. This is what, as per our wrong assumption. Now what is the problem in this assumption? जो पहला स्ट्राइक है ना, वो 5 सेकंड के बाद हुआ है रे. पहला स्ट्राइक 5 सेकंड के डिले के बाद बता रहा है. देख रहे हो? ठीक है, छठा स्ट्राइक 30 सेकंड में जाके लग गया, लेकिन पहला स्ट्राइक की प्रॉब्लम है ना. ऐसा कौन सा इंजीनियर है जो 5 सेकंड के बाद बता रहा है कि 12 बज गए, 6 बज गए? ठीक है ना. उसको पता है देयर इज सम रिकॉइल टाइम विद द हैमर और व्हाटएवर इट इज. सो रिकॉइल होने के लिए उसको पता है 6 बजने वाले तो पहले से रेडी रहेगा ना. या तो 6 बज गए, उसके बाद वो रिकॉइल हो रहा है, उसके बाद वो स्ट्राइक कर रहा है. दैट मींस वो 5 सेकंड का डिले दिखा रहा है यहाँ पे. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट वर्क. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन? द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज कि पहला स्ट्राइक 0 सेकंड पे लगना चाहिए और लास्ट स्ट्राइक 30th सेकंड पे लगना चाहिए. आर यू गेटिंग द आइडिया? सो यहाँ पे कितने इंटरवल्स आ गए? 1 2 3 4 5. नाउ दिस हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 5 इंटरवल्स. दैट मींस 5 इंटरवल्स इज 30th seconds, 30 seconds. सो एक इंटरवल कितने सेकंड का हो गया? एक इंटरवल 6 सेकंड का हो गया. सो द व्हाट इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन? द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 6 12 18 24 and 30. This is the proper distribution. As you can see, the last strike is on 30th second and the initial strike was on 0th second. So हमको पता चला कि एक इंटरवल 6 सेकंड का है, उसका रिकॉइल टाइम 6 सेकंड का चल रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रिकॉइल टाइम 6 सेकंड्स का है. अब 12 बज रहे हैं, ठीक है, वो 12 बार स्ट्राइक करेगा, 12 स्ट्राइक करेगा, यानी कि हर उसमें कितने उसके इंटरवल्स आएंगे? अब मैं सब लिख के नहीं दिखा रहा आपको, बट एज यू कैन सी 6 स्ट्राइक्स के लिए 5 इंटरवल्स आए थे. तो 12 स्ट्राइक्स के लिए कितने इंटरवल्स आएंगे बच्चे? 12 स्ट्राइक्स के लिए यू विल गेट 11 इंटरवल्स. एक इंटरवल कितने का है? 6 सेकंड्स का. तो 11 into 6, आंसर इज 66 seconds. इट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन. आप इसको दोबारा, अगर अभी आपके समझ में नहीं आया तो आप, ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे. यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना. स्पेशली टीसीएस में टारगेट हुए इसी इसी कंसेप्ट को लेकर के. कभी वो गन फायर करना शुरू कर देता है, कभी ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस वो बनाते रहते हैं. दे जस्ट ट्राई टू चेंज द cover book of the cover book, and then still the question is still the same. Okay, the concept is still the same. Okay, got this point? Okay. Let's move to the next question. I would say 30-second question because it's an analytical question. Try this.
Okay, let's say this question. So my husband watch gains 2 minutes every hour, and my watch loses 1 minute for each hour. One day we were late to marriage. Okay, these are all you can keep on giving this verbose statements. One day we were late to marriage because the difference between the time in the two watches was 1 hour, and we looked at the slow watch. When did we last set our watches to the same time? So we know that every hour this husband's watch is going to gain 2 minutes in every hour, and she will lose 1 minute. So can I simply say that यार 1 hour में the difference between these two watches will be 3 minutes, right? अरे वो 1 मिनट लूज कर रही है, 2 मिनट गेन कर रहा है, तो 3 मिनट का गैप आ जाएगा 1 घंटे में. Now the question is that he is already saying that it is a 1 hour. गैप कितने का है बच्चे? गैप मतलब वही जो the difference between two watches. Now to make it 1 hour. Now what is 1 hour? 1 hour is nothing but 60 minutes. सो 3 मिनट का गैप लेने के लिए मुझे 1 घंटा लग रहा है. मुझे अभी 60 मिनट का गैप चाहिए, तो इनटू कितना करना पड़ेगा? 20 3 जा 60. सो इधर भी इनटू 20 कर दो. दैट मीन्स 20 आवर्स इज द आंसर. अभी ये मैंने कहाँ से किया? तो भाई ये वापस आई एम टेलिंग यू, रेशियो का कमाल है. तो रेशियो अगर आपको बहुत अच्छे आते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हो. हार्डली मुझे लगता नहीं 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से. अच्छा, ये मैं हमेशा अपना हिस्सा बोल रहा हूँ. आप लोग रहोगे तो यार तो 10 साल से पढ़ा रहा है तो इसको तो होगा ही आइडिया सभी चीजें. ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त. द थिंग इज दैट व्हेन यू स्टडी प्रॉपरली ना, ये चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो आउट होने लगती हैं. एंड ट्रस्ट मी, वी हैव प्लेस्ड एंड वी हैव ट्रेन्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. वी नो हाउ the result comes and how the change in the behavior and how in the change in the approach of the question, the students obviously is altogether drastically changed after the training obviously. So this question has been taken from calendar. And for complete understanding of TCS, okay, what is the approach, what are the cutoffs, what are the sectional cutoffs? Because TCS when comes in campus has different approach when they go for this ninja type. Okay, so if you're looking for ninja, you should go through our website. There we have made videos as well for that purpose. Okay, you can watch and go through them. So hardly like a 20-second question. It's a 20-second question. So you might be thinking कि TCS ना easy कैसे दे रही है बेटा. लॉजिकल रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, एडवांस लेवल का लॉजिकल रीजनिंग है. उसमें एक आध क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पिछले पहले वाला क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो एडवांस लेवल से आए हुए थे. बाकी लॉजिकल रीजनिंग इज रिलेटिवली इजी. प्रॉब्लम आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. So, वो थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अगर आप टीसीएस को आप टारगेट कर रहे हो तो. ठीक है ना? So it was Tuesday on February 2005. What was the day on week on February 8, 2004? So we are going behind into the calendar, as you can see. And 2005 is a normal year, and this is a leap year. Understand this? So हम लोग 2 दिन पीछे जाने वाले हैं. अगर ये भी नॉर्मल ईयर होता तो हम 1 दिन ही पीछे जाते, बट सिंस दिस इज अ लीप ईयर तो हम 2 दिन पीछे पहुंच जाएंगे. सो ट्यूसडे विल बिकम बच्चा संडे. हेंस आंसर इज संडे. ठीक है ना? अच्छा, पीछे क्यों? अच्छा, वाई माइनस किया, -2 क्यों किया भाई? कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं. एज सिंपल एज दिस. ठीक है. सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. we'll see that topic somewhere. Okay, look at this question. Now I mean it's hardly a 20 to 30 second, I mean 20-second question only.
You just need to know when leap years are repeated. Like, so सभी को पता होता है normal year repeats कब करते हैं? They repeats after 11 years, or they repeats even after 6 years, if immediately followed by a leap year. Immediately followed by a leap year. Okay, so these are normally repeated after 11 years flat, या फिर अगर वो लीप ईयर के तुरंत बाद आए, जैसे फॉर एग्जांपल 2009 जो ईयर है वो +11 करने पर 2020 दे देगा, which is wrong option. So for this it is +6 which is 2015. Now how I come to know कि प्लस, एक तो ये पता चल गया कि यार 11 प्लस करते ही 2020 आ रहा है. अरे why 2020 is the wrong answer? Because this is a normal year day and this is a leap year. So normal year will never follow a leap year, right? तो इसलिए मुझे +6 करना पड़ेगा चेक करने के लिए. नॉर्मली कोई फॉलो कर पाएगा, राइट? बट because if I know the technique, this comes after 2008, immediately after a leap year, तो ये 6 साल में रिपीट करने वाला है. अदरवाइज सीधा 11 साल में रिपीट करेगा. Similarly, a leap year repeats after 28 years. This is another important thing. इसका ये क्या चक्कर है? लीप ईयर हमेशा 28 साल में जाकर रिपीट करता है. अब यहाँ पर 2016 था. I just need to erase a little bit. So 2016 उसने 29th February 2016 was Monday. If this is Monday, then अब वापस 28 साल में रिपीट करेगा तो तभी जब वो मंडे आएगा ना. So +28 कर देंगे. So this will be like 2044. फिर से +28 कर देंगे तो this will be like 2072. फिर से +28 कर देंगे तो it will be like 2100. बट वो 2099 तक ही जी, राइट? उससे पहले ही वो चली गई. तो उसको ये वाला लीप ईयर देखने को नहीं मिलेगा. तो उसको एक लीप ईयर देखने को मिला, अपना जो रिपीट हुआ था 2044 था, दूसरा 27 था. तो आंसर विल बी 2 times. शी विल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑन मंडे. रिपीट कर रहा है ना बेटा, ये मंडे आ जाएगा. यहाँ पर ये मंडे आ जाएगा, और यहाँ पर वो देखने से पहले ही जा चुकी है. ओके, 2100 में जाकर रिपीट करेगा. इसीलिए आंसर इज 2 times. One more thing I am like thinking that will it repeat after 2100 years? So I guess यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. 2800 में 2100 is not a leap year again. Okay, ये conceptual एक प्रॉब्लम है. मतलब conceptual 2100 is not a leap year. तो even though ये 28 में प्लस कर रहा हूँ मैं, 2100 is not a leap year again ना. It's not a leap year. तो फिर रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा वो चेक करना पड़ेगा फिर से, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस चला गया. तो ये जो 28 ईयर्स का है, अब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं. 20 ईयर्स का जो चक्कर है ये सिर्फ 19th सेंचुरी से लेकर के 21st सेंचुरी के बीच में, इसी रेंज में काम करता है. क्योंकि यहाँ पर हर 4 साल में लीप ईयर आता है. इनके बीच में लीप ईयर हर 4 साल में आता है. इसके आगे वाली रेंज में काम नहीं करेगा, ठीक है. सो इट्स अगेन अ वेरी, आई मीन वेरी माय फाइन पॉइंट आई वुड से. एंड I won't expect you guys to know this much fine tuning about calendars, but just I wrote by mistake 2100 as a leap year. It's not a leap year. Okay, it's not a leap year. So I'm just trying to clarify this point. Anyway, she will be able to celebrate only her 2 birthdays on Mondays. Okay, so I'm not affected by this. My answer is 2. Okay. Next question. Now this is logical deduction question. तो ऐसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, कभी कभी डिपेंड करता है डाटा कितना ज्यादा चाहिए इसमें उठाकर क्वेश्चन. 60 seconds I would say. ठीक है, but they can put into 90-second bracket also depending on the scenario. Okay, so let's see. Now see,
Just if you try to, B is not will have, if you go with this, try to decode every time this statements, you might end up with the time consuming problem. So how to deal with the search question is simply directly go with the options. B will not be with F. So B and F will not go in hand to hand. So can I see any B and F? No. So this point is of no use for time being. A and C must be together. If A is there, then C must be there. As you can see, now this is very interesting. This second information. A is going with C. So A is coming in all the options. So obviously C will should be there in the next particular guy, right? So as you can see, it is in B and C. So these two options are ruled out. Just by looking at one piece of information, and just by keeping your eyes wide open and your mind wide open, you will understand that two options are gone just by one, or I can say the second statement. Okay. Now E will not be with A, so E तो है ही नहीं इन दोनों में, तो सवाल उठता है G and D must be together, G and D must be together. G है, D है, तो obviously यार आंसर is C, as you can see here. मतलब इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसको 30 सेकंड दिए थे, बट अब मैं से 30 सेकंड वापस ले लेता हूँ। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो अब आप बोलोगे इतने इजी आता ही है क्या? अरे भाई, है ना, कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो मैंने वैसे ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आउट ऑफ 6 balls यू माइट एंड अप विद सम लूज बॉल्स आल्सो, जिसको आप बाउंड्री के बाद फॉर्म फेंक सकते हो, मतलब फॉर्म उठा सकते हो। सो डोंट वरी कि हमेशा डिफिकल्टी आता है, डिफिकल्टी पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन। आई वुड से देखिए, मुझे टेक्निक पता है, 10 सेकंड के लिए रुको यार, मेरे लिए 10 सेकंड, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं 30 सेकंड दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरे से पढ़ के किया होगा उसको मैं 15 सेकंड दे सकता हूँ। जस्ट किडिंग, ओके। Marketing should also be done, right? What do you think? So we have to think from every perspective, okay? Anyway, so let's solve this question. What it's saying is that F is okay, whatever, something is defined here and is looking for F is greater than B. F इधर है, B इधर है, और बीच में ये सिंबल यहाँ से यहाँ चला गया। ओ माय गॉड, इस सिंबल के ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। We cannot have any relation between them. B and D ये भी अपोजिट में चले गए, नो रिलेशन। आंसर इज नीदर। जस्ट मैंने एक चीज से, मुझे एक चीज पता थी जो आपको शायद ना पता हो, उस वजह से मैंने इसको बिना सॉल्व के ही आंसर बोल दिया कि आंसर है ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर बी और डी में अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो, बस ये एक ही डायरेक्शन में रहने चाहिए, तो ही आप रिलेशन निकाल पाओगे बच्चे। लेकिन जहां बीच में ऐसा चलते 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 रास्ते में कोई ऐसा आ गया, चलते चलते, और डी आ गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते भाई इनमें, चाहे ऐसे हो। बात समझ में आ रही है तो? तो ये रास्ते में यहाँ पर देखो सिंबल चेंज कर लिया था, यहाँ से लेसर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू आ गया था, खत्म। यहाँ पे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। सो if you attend this session of mine, you will understand how easily these kind of techniques have been taught, and how well you will be informed about this type of questions. Hardly, अच्छा खास बात पता है क्या? जब आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आपको लगता है कि यस, नाउ यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई मीन दिस क्वेश्चन पेपर। अच्छा, जब आपका यहाँ पे टाइम सेव होता है, तो आप आगे भी अच्छा परफॉर्म करते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, दूसरा ये आ गया कि आपका यहाँ पे टाइम बच रहा है, तो यू कैन स्पेंड टाइम ऑन लेंथियर क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड दिस आल्सो, okay? Even though TCS keeps on changing the patterns, so that is another hurdle here. But I'm talking about if you're looking for other campus placements, so they give sectional cut of time as well, so you can think of manage your times in between questions. Hope this is clear why it is not the possible answer, okay. Look at the same question, I guess, but
थोड़ा सा कुछ अलग किया है इसमें से। लेट्स सी, 40 seconds आई वुड से। Now, just I'm starting again. So in this question, what happened was that there was continuity maintained between the relations, as you can see here, right? But look at this question. They have put commas, like in, I mean, this is a broken statement. Acha, look, from M to M going, that's fine. Now here it is continued, and again N to L. So this is disconnected, right? There's a disconnected point. So जानबूझ करके एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को घुमाया, ऑब्वियसली टीसीएस है ये, ऐसे काम करती है। तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको यहाँ पे लिखना है, मतलब ये एल यहाँ से रिलेटेड है बच्चे, एल यहाँ से रिलेटेड है। सो ओके, सो लेट मी राइट दिस वंस अगेन टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। And L is equal to Q. So L is equal to Q and Q is smaller than K. So if Q is smaller than K, तो अगर मैं इसको यहां से पढ़ूंगा तो बच्चे K is greater than Q. K is greater than Q. So this will look like this. After merging these two statements, I will be coming up or ending up with this kind of statement. अच्छा, ये ऐसा क्यों किया है भाई, वो तो एग्जामिनर है, ठीक है, ऐसे ही करेगा। So now look at this now and now try to get the answer. Conclusion, K is greater than M. So K is greater than M. As you can see here, look at this symbol. They are moving in the same direction. Do you see this? So one is followed. One is followed. What about this? O is lesser than or equal to K. O is lesser than or equal to, O is here and K is here. And as you can see here, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पर एरो मार्क सही चल रहा है, लेकिन लुक एट दिस सिंबल गाइस, ये सिंबल यहाँ से यहाँ बदल गया ना। मैं क्या बोल रहा था, जब भी अपोजिट वाले सिंबल्स आ गए हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते इनके बीच में, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे लेसर देन इक्वल टू, ऐसे कोई भी रिलेशन आ गए तो हम लोग इनमें कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन 1 इज ट्रू। Hope it is making sense with you guys. Done. So another interesting topic, inequalities. अच्छा topic है, try कर सकते हो। This is a 90-second question, I would say, because the amount of information given in the question is too much. So I would say you can take 90 seconds to get the answer. All right. Coming to the point. Tell me one thing. अगर आपने टेस्ट इसी क्वेश्चन से शुरुआत की होती, या ये क्वेश्चन आपके सामने पहले क्वेश्चन ही आता, what would your reaction would be in that case? Leave the question भाई। इतना पढ़ने का टाइम किसके पास है? अरे गेट एन आइडिया, लुक एट द नंबर ऑफ लाइंस गाइस। अच्छा, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज टाइम, सो वी डोंट नो कि 90 सेकंड में होने वाला है कि नहीं होने वाला सवाल मेरे से। तो अगर मैं ट्राई भी करता हूं तो सी, अगर अदर देन टीसीएस इफ अ टारगेट where you have this freedom of going moving ahead and back, moving scrolling up and down in the question paper, तो भाई ये पहले राउंड का क्वेश्चन है ही नहीं। इतने सारे वर्ड्स और इतनी सारी लाइंस देख करके तो आदमी वैसे ही, आप मे बी लाइक
2 minutes you will start thinking and understanding the question. Okay, so after 2 minutes you realize कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है 2 मिनट के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपसे. सो दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास एबिलिटी है स्क्रॉल अप एंड डाउन करने की, लीव इट, नेवर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन. 2 मिनट के बाद डिसाइड कर पा रहे हो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. 2 मिनट का मतलब 2 मार्क्स नहीं चले गए आपके. और 2 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो बात को, अरे 2 मार्क्स तो यहीं पे गए, आपने 2 मिनट कहीं और डाले होते, कहीं और इस्तेमाल किए होते तो आपको 2 मार्क्स वहां मिल जाते. तो आपका 4 मार्क्स का लॉस हो चुका है. और 4 मार्क्स इज अ ह्यूज ह्यूज मार्जिन गाइस. यहाँ एक एक मार्क्स से जंग चल रही होती है, राइट? सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है एंड यू हैव द एबिलिटी टू स्क्रॉल अप एंड डाउन, भाई आप स्किप मार दो फटाक से. वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे. बट सिंस टीसीएस है तो टीसीएस में एवरी क्वेश्चन फेस ही करना होता है, बिकॉज निंजा में तो अभी तक यही करते आए लोग. लेकिन जब ये लोग किसी कैंपस में विजिट करते हैं तो चेंज देयर पैटर्न. सो गो थ्रू दैट आल्सो, व्हाट पैटर्न दे आर लुकिंग. ओके, so let's start and start reading this. The 8 students studying class 6, 7, 8 with no more than 3 students in any standard. Each of them has a favorite subject, which is chemistry, geography. Okay, these are the different subjects, not as in the same order. D likes chemistry and studies. Okay, D likes chemistry and studies in standard 8 with only H. Now this is a very important word, only H. That means standard 8 में D पढ़ता है और H पढ़ता है. ये भी 8th क्लास में ही है और कोई नहीं है. तो ये केस नॉट मोर देन 3, हाँ, और कोई नहीं है, राइट? ओनली बोल रखा है इसमें, यानी कि 2 ही बच्चे हैं जो 8 क्लास में पढ़ते हैं. बी डज नॉट स्टडी इन क्लास 7, ये भी समझ में आया, वो ठीक है. नॉट विद बी, सी एंड एफ सेम स्टडी, ठीक है. एक बार पढ़ना पड़ेगा पूरा, हाँ, ताकि समझने पड़े तो हम पूछ क्या रहे हो, कर क्या रहे. दो जो स्टडी इन क्लास 6 डू नॉट लाइक मैथ्स और बायोलॉजी और फिजिक्स. The one who study in class 8 like English, she does like geography, studies in Marathi, and whose favorite, whose subject does H like. H के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो 8 क्लास में पढ़ता है, और 8 क्लास की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे रखी है, 8 लाइक इंग्लिश. बस हो गया खत्म. हैव यू गॉट द आइडिया? भाई बिना उस पजल को सॉल्व किए, बिना वो डायग्राम पूरा बना करके पूरी इन्फॉर्मेशन भर कर, भाई उसके लिए तो 5 मिनट चाहिए मेरे को. 5 मिनट का है मेरे पास तो 90 सेकंड्स ही है अगर उनका डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये. सो ऑब्वियसली क्योंकि यू आर फोर्स टू गो थ्रू एवरी क्वेश्चन, बस आपको की पॉइंट्स पे नजर रखनी है, बस यही है. और क्या कर सकते हैं, देखो ना यहाँ पे 8 8 दिख रहा है, बस वही है, और क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो ऑब्वियसली इट्स अ वर्बस क्वेश्चन. अगर किसी दूसरे टेस्ट में आता है तो मैं पहली बार में इसको स्किप कर दूंगा, मैं पहले राउंड में स्कोर करूंगा ही नहीं अपने पास. मे बी आई विल ट्राई टू लुक फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स. होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन. So this again question has been taken from syllogisms. I would say 90 seconds. All right, let's try this question. So some plants are roots, some plants are roots, some roots are leaves, some roots are leaves, all leaves are branches, all leaves are branches. So again, I have drawn the diagram as per the rule of minimum overlap. Okay.
So some plants are branches. Conclusion: some plants are branches. As you can see, there is no overlap between plant and branches. As you can see, there is no overlap, so this will not be followed. Some plant roots are branches. Some roots are branches. As you can see, roots and branches have some overlap in between, so this will be followed. Some plants are leaves. Some plants are leaves. As you can see, there is no overlap between plant and leaf, so this is gone. No plant is branch. Now look at this interesting conclusion. They have come up with no. अभी तक जितने भी हमने conclusion read किए थे, they were all with some. There was no negative conclusion. But the moment you get a negative conclusion, this is a negative conclusion, you have to somehow change the diagram. क्योंकि diagram हमारा बनाया था हमने positive conclusions के लिए. And positive conclusions fail at minimum overlap. इसलिए हमने ये diagram बनाया था. Similarly, negative conclusions fail at maximum overlap. तो हम maximum overlap करने की कोशिश करेंगे. No plant is branch. क्या plant को branch में enter करने के लिए कोई restriction है क्या? कोई भी restriction नहीं है. Plant मैं चाहता तो diagram को modify करके ऐसे बना सकता. इसने बोला कोई भी प्लांट ब्रांच नहीं है. ओरिजिनल डायग्राम में नहीं है, बिल्कुल सही है. लेकिन मैंने जब डायग्राम को मॉडिफाई किया, मुझे दिखा कि प्लांट और ब्रांच ओवरलैप हो रहे हैं. इसने बोला नहीं हो सकते, मैंने बोला हो सकते हैं. ये गलत हो गया. अरे ये गलत हो गया ना. इसने क्या बोला? इसने ये बोला भाई कि कोई भी प्लांट ब्रांच नहीं है. जब मैंने अपना डायग्राम ओरिजिनल रखा था तो बिल्कुल सही बात कह रहा था कि यार कोई भी प्लांट ब्रांच नहीं दिख रहा है. ओवरलैप कहाँ दिख रहा है आपको इसके अंदर? सही है. लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो मुझे डायग्राम को मैक्सिमम ओवरलैप पे करना पड़ेगा. और जब मैं इसको मैक्सिमम ओवरलैप पे करूंगा तो मुझे प्लांट को ब्रांच में एंटर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यही नहीं है यहाँ पे किसी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन. तो आई कैन मेक दिस डायग्राम एंड हेंस इसने बोला कोई भी प्लांट ब्रांच नहीं है. मैंने पूरी फिर दिखा दिया इसका उल्टा कि यस देयर आर सर्टेन प्लांट विच आर ब्रांच. इसलिए ये बात गलत हो गई. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. ओनली सेकंड इज ट्रू. Yes, I can say that only second is true. But as I moved on, I found out that only second and either 1 or 4 is true. अब यहां पर इन लोगों ने यहां पर दो स्टेटमेंट्स में, दो कंक्लूजन में सॉरी, इधर और लगाया है. इन दोनों के अंदर इधर और लगाया है. ठीक है ना. इन दोनों में से इधर और चलाया है. सो अब इधर और के लिए हमको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी. उसके हिसाब से हम सॉल्व कर पाएंगे. अब इधर और की कुछ कंडीशंस हैं. पहला है बोथ इंडिविजुअली रॉन्ग रहने चाहिए. बोथ. अब ये सब चीजें थोड़ा सा हम लोग थियरी में पढ़ाते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन जॉइन आवर सेशंस. बोथ इंडिविजुअली रॉन्ग रहने चाहिए, पहला. दूसरा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहना चाहिए. प्लांट प्लांट, ब्रांच ब्रांच, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेम रहना चाहिए. तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स? उसकी कुछ वेल डिफाइंड मीनिंग्स है. पहला है सम प्लस नो. सेकंड है सम प्लस सम नॉट. एंड द थर्ड वन इज ऑल प्लस सम नॉट. यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि ऑल प्लस नो इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. Okay? All plus no is not a complementary pair. Sometimes they try to confuse you with that, so be careful. So my first condition, both individually wrong, पास हो गई. दोनों wrong है, देखो दिख रहा है आपको बकायदा. पहली कंडीशन पास. सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, प्लांट प्लांट, ब्रांच ब्रांच. सेकंड कंडीशन पास. थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम एंड नो. सम प्लस नो इस फॉर्म में चला गया, सम प्लस नो में. इसलिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. इसलिए आंसर इज ऑप्शन ई. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई. हमारे सारे केसेस, हमारे सारे कंडीशंस जो इधर और के चलते हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं. इसलिए इसका आंसर आएगा बच्चे. आंसर इज ऑप्शन ई. होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, इट्स अ बिट थियरिकल पार्ट. फॉर दैट you need a complete understanding. Okay.
This question has been taken from sequence. Try. Let's say 50 seconds. Okay, this is bit different series as you can observe. But one thing is there, yeah, ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है तो माइनस ही आना चाहिए. सो माइनस ही आना चाहिए. इस हिसाब से तो COD गायब है. ठीक है ना. तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर बी है. राइट. सो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन एंड टू रूल्स. अगर दो ऑप्शंस भी अगर आपके रूल आउट हो जाते हैं तो यू आर 50% क्लोजर टू द आंसर. या तो ये है या फिर ये है. राइट. So obviously you must observe the things. Now, what could be the pattern they have followed? Okay. Now, if I say 1, 3, 9, 27, they are all multiples of 3. Somehow they are related to 3 only, right? So अगर मैं बात करूं यहाँ, अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि there are only one solution possible. हाँ, there are multiple solutions possible for such questions. But मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है क्या. पैटर्न आ रहा है देखो. इन दोनों को -3 को 1 से डिवाइड किया -3. 9 को डिवाइड किया -3 से तो अगेन -3. 27 को डिवाइड -27 को डिवाइड किया 9 से तो अगेन -3. सो 81 को डिवाइड करूंगा मैं -27 से तो यू विल अगेन गेट -3. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म. राइट. सो अभी क्या होगा. अभी मैं इसके बाद वाले टर्म को, राइट, इसके बाद वाला टर्म अगर मैंने x पकड़ लिया है तो उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा. ऑब्वियसली इट शुड बी माइनस एंड आई शुड गेट -3. सॉरी 81. अरे x को इससे डिवाइड करूंगा ना. x इज इक्वल टू -3 इंटू 81. तो 3 1 3, लास्ट में 3 आके वो सब में बैठा हुआ है. 8 से 24 243. तो आंसर इज ऑप्शन बी. सो सी दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी. लेकिन एक चीज है, जितने आसान होते हैं क्वेश्चंस उतना ही टाइम वेस्ट कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत सोचा और आपको लग रहा है कि अब आंसर आ जाएगा. अरे इजी, ये सोच लूंगा हो जाएगा. नहीं होता है. समटाइम्स दे गिव सच अ वियर्ड सीरीज that people stuck and waste their time unnecessarily. So मेरा सजेशन ये रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आपसे क्लिक हो गया, if you are able to click and get the answer, you can get the click in like 40 to 50 seconds. और आपको लग रहा है कि यार इससे ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को सॉल्व करने के लिए, तो भाई छोड़ दे यार. इट्स अ टाइपिस्टिक क्वेश्चन. तो बता रहा हूँ. और ये ऐसा लगता रहता है अब हो जाएगा, अरे इजी है, आ जाएगा, कर लूंगा, देख लूंगा. नहीं आता कभी कभी. So sometimes they make such a weird pattern which is not that easy to detect, and it requires a lot of technique. I mean practice. Okay, especially if you focus this. यहाँ पे एक काम करती है, वो होती है pyramid series के नाम से जाने जाती है. pyramid series. That means difference starts getting a pattern. Okay. Difference starts getting a pattern, or difference and difference will start making a pattern. सो इन्वर्टेड पिरामिड बनने लगता है इसमें. तो बेस्ट अप्रोच इज आप डिफरेंस लेना शुरू कर दें. डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. फिर उसका अगर नहीं पैटर्न आ रहा तो उसका डिफरेंस निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है, ऐसा करके चलता है. ठीक है. सो आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा विच आई हैव टेकन फ्रॉम दिस. और एक आध क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि टू मेक इट 25, लेट्स मेक इट 25 क्वेश्चंस. सो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं अपनी तरफ से. ऐसे क्वेश्चंस भी TCS में देखे जा रहे हैं जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर पैटर्न्स. स्पेशली कैपजेमिनी भी ऐसे पैटर्न्स चलाती है. सो कैपजेमिनी भी ऐसे क्वेश्चंस पे काम कर रही है.
एंड आई होप यू आर अवेयर ऑल द सिविल सर्विस एग्जाम्स, उसमें तो कॉमन चलते रहते हैं सिविल सर्विसेज, इफ यू आर लुकिंग फॉर एट ऑल, इफ एनी वन ऑफ यू लुकिंग फॉर सिविल सर्विसेज. So as you can see, what could be the answer here? So it is easy. I mean, it's not that difficult as you can see here. Look at the curly brackets. I mean, this parenthesis, what do you call? I mean, this brackets. So यहाँ पर ये इन अंदर साइड है, ये अब यहाँ पर ये बाहर साइड में दिख रहे हैं आपको, ये पैटर्न बाहर की तरफ दिख रहा है, फिर अंदर की तरफ आ गया, फिर बाहर की तरफ चला गया, और फिर अंदर की तरफ आ गया. तो अब बाहर की तरफ आना चाहिए. बाहर की तरफ आएगा मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता. या तो सेकंड ऑप्शन है या फिर फोर्थ ऑप्शन है. तो एक ही आइडिया से हमारे तीन ऑप्शन अगर रूल आउट होते हैं भाई, इट्स लाइक पांच ऑप्शंस में से अगर आपके तीन ऑप्शन रूल आउट हो गए तो यू आर like you are about 40%, I mean not 40%, I would say it's like 60% you are on the right track. All right, so not even 60%, I would say 50-50. Now you are either with two or four, one of them is the answer, so 50-50%, right? Getting the idea? So what is that? The next thing you can observe is two arrows upwards, then downwards, then two arrows should be upwards, right, guys? Consecutively two upwards, two downs, and then there must be two ups. So which one is up? This one is up, and hence the answer. That's it. It's gone. Second is the answer. Second option. So just by observing a little understanding, you can get the answer anytime. Hope you have got this point. So now this question is a bit remaining, जो बीच में रह गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है. So कोई नहीं, मैं आपको एक नया स्लाइड कर देता हूँ. एक क्वेश्चन मैं लास्ट लेता हूँ, so that let's make it 25 questions. That's the reason. Okay, so एक क्वेश्चन काफी दिनों से चल रहा था, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर. इफ पी क्यू आर एस आर single digit numbers, if p q r s are single digit numbers, then find the maximum value of p plus q into r plus s. So let me write the options for you guys. 220, 221, 224, and 225. So let this be our last question. Again, see, whenever such questions are asked, लगता आसान है क्या यार, ऐसी है तो कुछ नहीं है, दे दो ना भाई. 9, 8, 7, 6 पक्का एज है, बिल्कुल सही है. अब लोग क्या करते हैं, बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट, लुक एट दिस, आई एम मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्ट. तो लोग क्या करते हैं, इसको 9 पे करते हैं, इसको 8 पे करते हैं, 9+8, और इसको 7+6 कर लेते हैं. तो 9+8 कितना होता है बच्चे, 17, और 7+6 कितना होता है, 30. और जैसे इसको तो मल्टीप्लाई करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा 221. एंड हियर इज वन ऑफ द ऑप्शन इज 221. Trust me, guys, this is a wrong answer. Okay, this is a wrong answer. Now, this question is very intelligently designed, and if we have to maximize this product, now this is something technical thing I would like to explain here. If you want to maximize the product, both these quantities should be, as far as possible, they should be symmetric. Symmetric मतलब क्या, जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर रहनी चाहिए. जितना ये सिमेट्रिक नंबर्स रहेंगे उसकी वजह से उतना ही इनका मैक्सिमाइज्ड प्रोडक्ट हो जाएगा. I'll show you what I mean by this. So अगर मैं कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं इन नंबर्स के लिए, you know, so 9+7 कितना होता है बच्चे, it's 8+6 is 13. Okay,
अभी तो ज्यादा सिमेट्रिक नहीं आ रहा. 9 plus 7 is 16 and 8 plus 6 is 14. No. So let's go with this. 9 plus 6 is 15 and 8 plus 7 is also 15. Yes. जितना ये बैलेंस रहेगा, जितना सिमेट्रिक रहेगा, उतना ही प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आएगा, and which is 225, and hence the answer is option A. So these are the things, smaller things, small things that we should take care of while dealing such questions. Obviously, चीजें आसान होती हैं, लेकिन they will, कभी कभी आदमी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ये तो सिंपल था, बट वो थोड़ा सा भी आपने लेजीनेस कर दिया, if you're down, you're guarded, you're gone. So always be careful about such questions. Okay. So guys, this was the last slide I had for TCS. I hope you guys have enjoyed the session. Okay. And I wish you very best. Solve it as per जहां तक हो सके. पहली बात तो आप इसको पहले प्रैक्टिस करें, because as I told you, this is not a one day task. This aptitude is not a one day task. It's not a last minute preparation के you can, okay, 2 दिन के बाद कैंपस क्या प्लेसमेंट आ रहा है और आज मैं बैठ जाऊं करने के लिए, तो मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगता है. It needs some time. It requires you to spend some time with the subject, with the topic. ठीक है. जब तक आप इसको समझ करके अपना नहीं बना पाओगे, तो it will be very difficult to crack. Trust me, guys. Especially if you're looking for TCS. TCS is one of the benchmark, you can say, in terms of difficulties whenever campus placements are done. Okay. Relatively, you can talk about Capgemini. They're relatively easy. Cognizant is again easy. Infosys is so. Okay. So thank you, guys. Thank you for being with us. Have a great day, and do subscribe our channel and do watch other videos which have been done by our another very smart trainer, okay, and who has a lot of experience, who teaches very well also. You will enjoy it. Look at the videos and you'll enjoy it. Definitely enjoy it. Okay. So have a great day. Thank you.